Hello students. So as you all know that council has given and posted the new syllabus with bifurcation. That is, you all should know that the examination will be conducted into 2 semesters, and the council has, for the convenience of the students and the teachers, the council has bifurcated the syllabus. The syllabus has been divided into 2 parts. So the first part, online examination will be held, which will be based on MCQ pattern, and you have to prepare among the stories you have to prepare to build a fire also. Although the story is very lengthy and boring at the same time, but because it is there in first semester, so you have to prepare, and your preparation should be very very strong, because the examination is not based on detailed question paper. You are supposed to solve the MCQs. So 4 options will be given, and then you have to select any one correct option, which is, I think, in my opinion, it is a difficult examination. Detailed answers, so you can write anything and you can get marks. Okay? So this story is basically written by Jack London, and the story is very lengthy, so I will not much go into the detail of the text, but the important textual references and the details which are present, that I am going to inform to you. The first and the most important thing is that the story starts with when a solitary hiker with his wild wolf dog was on a short journey in Yukon, in the territory of Yukon, to be reunited with his men, with his friends at the camp on a very cold snowy evening. Very cold is not actually correct. It was extreme cold. You can say that the temperature was 75 degrees below zero, so you can have an idea that how cold it was. And there are 2 themes of the story. Theme number 1, one should not give up easily even in the face of death. ये जो सॉलिटरी हाइकर है वो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में आएगा जहाँ पे रीडर्स को भी ऐसा लगेगा, और जो प्रोटैगनिस्ट है, ये जो नेमलेस प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो मेन लीड है, उसका कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, तो वो एकदम ऐसी कंडीशन में, जो इतनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होंगे, एक्सट्रीम वेदर होगा, वेयर वन वुड लाइक टू सरेंडर टू डेथ, but he does not surrenders to death. So this is what the hiker shows us. तो ये solitary hiker जो है उसका main character है. दूसरा जो theme है वो ये है कि one should not be over confident. वो भी इसी solitary hiker से related है कि इस solitary hiker को जब ये बात पता थी that it was very such an extreme weather and he should not travel, तो he should not have started his journey. लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी ईगरनेस ने उसको ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए बोला. एंड द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी वेरी सैडनिंग. So because there is no plot and there are no too many characters, the only character is this protagonist who is without any name, and then he is accompanied by a wolf dog. तो वो आपको ध्यान में रखना है. So this man was a newcomer on this island and he was without any imagination, meaning to say he did not had any idea कि ये एक्सट्रीम वेदर जो है वो कितना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है. ठीक है. यूकॉन वॉज अ सिटी इन ओक्लाहोमा. ये आपको याद रखना है कि जिस यूकॉन टेरिटरी के थ्रू वो जर्नी कर रहा था वो ओक्लाहोमा की एक सिटी है. ठीक है. So in the very first stanza, the writer tells us about the extreme weather. The writer uses the term grey, exceedingly cold and grey. ठीक है. और ये सब यूकॉन ट्रेल के बारे में बताया जा रहा है that the weather was extremely cold. It was dull outside and extremely cold. एंड दिस लिटिल ट्रैवल्ड ट्रेल, यानी कि बहुत इतना एक्सट्रीम वेदर होता था कि यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत लेस होती थी, कि जो टिम्बरलैंड था या स्प्रूस ट्रीज से भरा हुआ ये जो पाथ था वो ऐसा लगता था कि बहुत ही लेस यूज्ड है. एंड द टाइम व्हेन दिस प्रोटैगनिस्ट स्टार्टेड द जर्नी, इट वाज 9 o'clock. There was no sun nor hint of any sun, but the sky was without any clouds. क्लियर डे था, बट इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड it was subtle gloom
an intangible pall. Pall also means dullness and intangible means indescribable, जिसको describe नहीं किया जा सकता. इतना clear और इतना dull climate था. The poet is using the word gloom, which means sadness. But because this protagonist wanted to meet his friends, so it did not worry him, and because he was not the native of that place, so that is why he could not make an idea of the extremity of the weather and how dangerous it could be for his body and for his companion dog. So he just started his journey, and at the start of his journey he had energy in him. In the second stanza, the writer talks about this Yukon Lake, the territory, and which was hidden under the tree, 3 feet of ice. आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूरी टेरिटरी जो है वो इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है कि 3 feet ऑफ आइस से कवर्ड है, और उस आइस के ऊपर भी बहुत ऊंची फीट से many feet ऑफ स्नो है, all pure white rolling in gentle undulations. Undulations means through. आप दूर दूर तक नॉर्थ और साउथ किधर भी देखेंगे तो यू कुड सी ओनली अनब्रोकन वाइट आइस, एंड एक्सेप्ट फॉर द डार्क हेयर लाइन दैट कर्व्ड एंड ट्विस्टेड फ्रॉम अराउंड द स्प्रूस कवर्ड आइलैंड. सिर्फ एक हल्की सी डार्क हेयर लाइन दिखती है जो कि पाथ है, जो कि ट्रेल है, और वो क्योंकि दोनों साइड स्प्रूस ट्रीज हैं तो जो लीव्स हैं उन्होंने एक पाथ क्रिएट कर दिया है. इट वॉज कर्व्ड, इट वॉज ट्विस्टेड टू सम प्लेसेस, and this path was basically spruce covered. ये जो spruce की leaves थी उससे covered था ये island, और ये जो trail था, ये जो path था, वो ही main trail था. Now this trail led south 500 miles to Chilkoot Pass, Daya, salt water, and that led north 70 miles to Dawson, and still on to the north 1,000 miles to Nulato, and finally to St. Michael on Bering Sea. And in spite of that 1,000 miles and half 1,000 more, इतना ट्रैवल करना था. ये जो सारी आप इधर देखिए, ये जो सारी डिटेल्स अंडरलाइन है. चिलकूट पास, डाया, सॉल्ट वाटर, 70 miles to Dawson, then Nulato, St. Michael on Bering Sea, 1,000 miles and half 1,000 more. इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना था, और वो भी टेम्परेचर कितना आपको बताया, 75 degrees below zero. But the eagerness of this traveler, this unnamed protagonist, was so high that he just was moving towards the hairline trail. वो इस path पे चलता चला जा रहा था in the absence of the sun from the sky and in extreme weather. And it was not because he was long used to it. ऐसा नहीं था कि वो वहीं का नेटिव था और वो एक एक्सट्रीम वेदर का वो उसको आदत थी, उसको पता था. एक्चुअली ही वॉज अ न्यू कमर. वो तो बिल्कुल फ्रेशर था उस आइलैंड के लिए, और जिसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है टेक्स्ट में, चिकाको. चिकाको मीन्स न्यू कमर, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट विंटर देयर. तो वो जो एक्साइटमेंट था, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसका, जो सेकेंड थीम है देखिए जस्टिफाई हो रही है, वो जो उसका एक्साइटमेंट था वो उसको एक्चुअली बूस्ट अप कर रहा था उसके मोरल को, और उसको गाइडेंस दे रहा था दैट ही शुड ट्रैवल. फिर उसके बाद टेम्परेचर की बात देखिए, इसी स्टैंजा में नैरेटर कर रहा है 50 degrees below zero. आप आइडिया लगा सकते हैं 50 degrees below zero तो सिर्फ रिकॉर्डेड टेम्परेचर है. इट एक्चुअली मेंट 80 odd degrees ऑफ फ्रॉस्ट. ठीक है, ये तो 50 degrees तो ज़ीरो के नीचे आ गया, लेकिन जो फ्रॉस्ट की प्रेजेंस है वहाँ पे, जो आइस 3 feet आइस है वहाँ पे, उसकी प्रेजेंस की वजह से आप उसको बोल सकते हैं कि 80 odd degrees उसमें आप और ऐड कर लीजिए. एंड इट डिड नॉट लीड हिम टू मेडिटेट. वो उसके बाद भी वो कुछ नहीं सोच रहा, ही इज़ नॉट थिंकिंग एनीथिंग, एंड ही जस्ट वांटेड टू मूव, ही जस्ट वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स. And then what happened, 50 degrees below zero stood for a bite of frost that hurt and that must be guarded against by the use of mittens, air flaps, warm moccasins and thick socks. ये देखिए, these are the things which this nameless character, meaning to say this hiker, he was wearing. तो moccasins are a kind of flat shoes and mittens are gloves. Ear flaps, warm moccasins उसने पहना हुआ, but in spite of thick socks, but in spite of all these things, the writer says that the temperature was extreme and it could be fatal for the life of the traveler. Now in this stanza, the narrator
talks about the डिपिक्शन ऑफ इंटेंस कोल्ड. नैरेटर इंटेंस कोल्ड का डिपिक्शन बता रहा है और आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि नैरेटर ये बोल रहा है कि एज ही टर्न्ड, यानी ही कौन हो गया, दिस प्रोटैगनिस्ट, व्हेन ही टर्न टू गो आउट, व्हेन ही वाज व्हाइल ही वाज वॉकिंग, ही स्पैट. उसने ऐसे ही जैसे जनरली हम स्पिट करते हैं, ही स्पैट, एंड देयर वाज अ शार्प एक्सप्लोसिव क्रैकल दैट स्टार्टल्ड हिम. द मोमेंट ही स्पैट, हिज स्पिट कन्वर्टेड, transformed into an ice, all right, and then it had a sharp explosive crackling sound. He just wanted to check what exactly happened. He spat again and the same thing happened again. The same, this his spittle crackled, ठीक है. His spit was converted into before it could fall down onto the ground, it was converted into ice. How much colder he did not know, but the temperature did not matter. अभी भी वो रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि उसकी ये जर्नी उसके लिए फैटल हो सकती है, उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, एंड ही इज़ जस्ट मूविंग ऑन. Then this is the place where he was supposed to reach. He was bound for the old claim on the theft fork of Henderson Creek. So this is the place where he was supposed to reach, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स, हिज बॉयज़ वर ऑलरेडी प्रेजेंट. एक्चुअली दे हैड कम ओवर अक्रॉस द डिवाइड फ्रॉम द इंडियन क्रीक कंट्री, ठीक है. एंड दिस प्रोटैगनिस्ट हैड कम द राउंड अबाउट वे टू टेक अ लुक ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग आउट लॉग्स इन द स्प्रिंग फ्रॉम द आइलैंड ऑफ द यूकॉन. ये जो प्रोटैगनिस्ट है वो यूकॉन टेरिटरी में आ गया था इन ऑर्डर टू गेट आउट लॉग्स, इन ऑर्डर टू गेट लॉग्स, ठीक है. So now he would be in the camp by 6 o'clock, a bit after dark. उसने क्या आइडिया लगाया कि वो इतनी जर्नी कर लेगा तो he would actually be able to reach the place where his boys were already present by 6 o'clock. And जो डिस्टेंस था उस हिसाब से उसका स्पेकुलेशन, उसका आइडिया करेक्ट था, बट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड उसको और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी दूसरी चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल द बिस्किट्स विच ही केप्ट इन ऑर्डर टू ईट, he also want to keep the biscuits away from freezing, because once they would freeze it would become difficult for him to eat, क्योंकि उसके पास और कुछ लंच करने के लिए नहीं था, ठीक है. He plunged in among the big spruce trees. So he actually rushed towards the spruce trees. The trail was faint. ये जो path था वो बहुत ही weak था, और a foot of snow had fallen since the last sled had passed over, and was glad he was without a sledge, travelling light. In fact, he carried nothing but the lunch wrapped in the handkerchief. उसने बाकी और कोई चीज़ नहीं रखी थी, बल्कि एक वो रखा था, एक लंच रखा था उसने रैप करके हैंडकचीफ में, और वो एक्सट्रीम कोल्ड से उसको बचाना चाह रहा था. लंच के फॉर्म में उसके पास सिर्फ बिस्किट्स थे जिसको उसको फ्रीजिंग से सेव करना था. Now what happened, after some time he was surprised because it was so cold that he felt that he rubbed his numb nose and cheekbones with his mittened hand. He was a warm whiskered man, but the hair on his face did not protect the high cheekbones and the eager nose that thrust itself aggressively into the frosty air. See, every part of his body was deeply covered with so many woolen things, जो पहले ही बताया गया है, but his cheekbones and his nose, they were open, and his cheekbones could not tolerate that extreme cold, and his nose became numb, meaning to say senseless. Then this is the point where the writer describes his dog. So with this man trotted means walked a dog, a big native husky, a proper wolf dog. एक proper बड़ा सा huge wolf dog है जो उसी place का है, और वो इसके साथ accompany कर रहा है, और बड़े बड़े उसके फर हैं ग्रे कलर के. And but he knew even that because the animal was the native, so he knew that this traveling is might be dangerous for this man, ठीक है. So the man was accompanied by a big native dog. It was a wolf dog, grey coated and not noticeably different from its brother, but the animal was actually worried by the cold, and its instinct told him that this was no time to travel. तो एनिमल जो था उसने भी एक आइडिया लगा लिया था कि इट वॉज 75 बिलो ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना नीचे है टेम्परेचर.
and possibly in its brain there was no sharp consciousness of the condition of very cold such as it was the man's brain. ठीक है, तो ये एक्सट्रीम वेदर जो है वो ना सिर्फ आपकी बॉडी को वीक बना देता है, बट एट द सेम टाइम योर मेंटल एबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज. Possibly in its brain there was no sharp consciousness of the condition of very cold as it was the man's brain, but the brute had its sting. Brute यहाँ पे wild dog को बोला जा रहा है, तो animal ने आइडिया लगा लिया था that this traveling might be dangerous for man and itself both. The dog had learned fire and it wanted fire, or else to burrow under the snow and cuddle its warm away from the air. Now dog knew that there are two ways to save from the extreme weather. One was to enjoy the fire, and second one was to bury a place under the snow and to keep its body inside the snow so that it can be away from the freezy cold. Now this so we will complete this story till this place. This is page number 37. And then the next part of the story, the B part of the story will be, I will start from page number 37.